The sound is not क्या audible. पूछ सकते हैं, क्या हाल है बेटीना? सर को कोई कॉल करो यार। सर ज्वाइन है कि नहीं? अभी सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Okay. So let's start now. अरे बाबा, almost 90 people are there. So okay, very good. So now तो हम लोग क्या किए लास्ट क्लास तक? So now both the classes syllabus now in the same position. So I decided to take classes all together because everybody actually in each classes I have seen that total number of two students are not exceeding 45. So maybe let's try. If not possible, then we will go to the single class mode again. Okay. So what we are discussing single slit diffraction phenomena, which is a class of Fraunhofer diffraction. So और एक बार मैं draw करता हूँ. Suppose this is a infinitely long slit, okay, with the opening B, and we have illuminated this slit with a plane wave, okay, of wavelength lambda. Okay, so what happens? So if it is so, then so what we do mostly we have to put one lens here, convex lens, and then a screen here. So let's say one arbitrary point is P on the screen. So we have one find out what is the total intensity at P, okay, from this diffraction pattern slit, okay. So and so as you know that, so suppose if I want to say that P is a particular point, so mathematically how we can decide that this is the particular point? So this actually is characterized by the angle with the perpendicular of the slit, or you can say the parallel to the optics axis, how much angle is making. So basically, if we change theta, you can move throughout the screen. Suppose if I put theta equal to 0, then you will just, it will be just parallel, okay, like this. So in this case, this is theta equal to 0. Let's say theta equal to theta. And now if I take a symmetrical point here, P dot, so in that case, it will be something like this. And then so sorry, I Yes, no. It should be converged at focal point of the so this is a parallel ray, so they should converge at here in this point. So now that means, so this is, let's say if it is theta, then this is minus theta or something like that. So that means if I can find out the intensity as a function of theta, so that will effectively give you the diffraction pattern on the screen. समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? So now we know that the intensity at any arbitrary point is actually क्या था ये? I0 not square. sine square beta divided by beta square, where beta equal to pi b sine theta divided by lambda. So that means we are effectively, we know that for a particular set of experiment, pi is a constant, b is the slit width, and lambda is the wavelength of light. So these two things are constant. So what is variable here? So that means you can say bi is a function of beta,
which is a function of theta. So this will give you diffraction pattern on the screen. Diffraction pattern on the screen. Okay, so our job is to find out how the intensity is actually varying as a function of theta. So that means we have to find out the position of maxima and minima. Position of maxima and minima. So this will give you the pattern. जैसे हम लोग इंटरफेरेंस में किए थे, what are the condition for maxima and what are the condition for minima? Here we will also do the same thing, similar way. So my screen is visible now. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes. now tell me. Yes, sir. Acha, when I will be zero? When I will be zero? If sine beta will be zero, if sine beta is zero, then you can say I is zero. So what is the condition for max? Acha, first let us do it. Minima. Where is the minima? So minima intensity will give you I equal to zero. कब I equal to zero होगा? जब beta equal to zero होगा, then it will give you general solution. That means when sine beta equal to zero. So that means beta equal to m5, where m equal to plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, like this way. Okay, so this is the condition for minima, but you can see that I didn't include the value m equal to 0. Actually, m equal to 0 will give you separate situation. M not equal to 0 here. You cannot include. So now if I put m equal to 0, then what happens? So now if I put m equal to 0, Intensity will become undefined. yeah, no, not undefined. If I put, so sine beta by beta will give you 1. If I put the limit, so let's put it. So for beta equal to 0, obviously. M equal to 0 means beta equal to 0. So for m equal to 0, so that means beta equal to 0 or tends to 0. If I put the limit, means it is closer to this point, theta equal to 0. Theta equal to 0 मतलब क्या है? Beta equal to 0 मतलब theta equal to 0. मतलब I am talking about this point. Obviously, 0 degree. That means if beta tends to 0 means beta tends to 0. So that means close to the point this one. What will be the intensity? So if I want to calculate it, so that means you have to put a limit here. So limit beta tends to 0. क्या था? आपका I निकालना है. तो आप देखिए इसमें क्या क्या था? लिमिट बीटा टेंड्स टू 0 क्या है? साइन स्क्वायर बीटा, साइन बीटा बाय बीटा होल स्क्वायर, और क्या था इसके साथ? I0 था. So let's take out I0. I0 is a constant. So this is 1. So that means it will give you I0. So this is the maximum intensity. Okay. So maximum intensity I0. ओके, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा. इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा. So that means in this point you will get high intensity. Okay, around theta equal to 0. So it has a particular width. It's not a straight line. So because as I said that this is beta, theta tends to 0. It's not exactly theta equal to 0. So it is there is a so that means that's why we didn't include
because we are calculating minima I equal to 0, but if I take m equal to 0 here, so that will give you central maximum. So that means, so when we are discussing the minima, where dark, we will see dark nature of the light. So in that case, you have to put this equation. Now, what is the value of beta? So beta is equals to, so मैं इसको साफ कर देता हूँ. So now, if I put this one, so condition for minima, यहाँ पे मिनिमा जो है डार्क है, because I equal to 0 है, so dark, completely dark, not like okay. So क्या होगा आपको? So that is actually beta equal to m pi, where m equal to 1, 2, 3 like that. Obviously, I'm talking about plus minus. Plus minus means plus is upper side, but the theta is positive, okay, and minus means theta is negative, okay. So now we can put here. So plus minus means either side of the central maxima, okay, above or below, okay. So now what is beta? Beta is pi b sine theta divided by lambda equal to a pi. So that means b sine theta equal to n lambda. So this is very important relation for diffraction minima. ये आप बाद में जब X-ray diffraction वगैरह पढ़ेंगे, you will use that equation. It's a very famous equation derived by Fraunhofer, and it's very important. So this is the condition for minima. Okay. So now so effectively how many minima we will get? So it should go up to infinity, okay, but this is not the case. You won't see infinite number of minima here, because sine theta has some limitation, okay. So now what is the first position of first minima? So theta will be how much? Theta will be a into sine inverse क्या होगा? A into lambda by b. So these are the values of theta for which we will see the minima dark on the screen. So now what is the first minima? First position of first minima. First minima मतलब m equal to 1 होगा. So this will give you first minima. So theta will become how much? Sine inverse lambda by b. Second minima क्या होगा? Similarly, theta will be sine inverse 2 lambda by b. So now, so lambda by b, it is a numerical value. So now see, if I go from first, second, third, actually this value is getting increased. Okay. So now you cannot go infinite, because sine is actually it's this parameter m lambda by b should not increase 1, because we know that sine theta cannot be greater than unity. Okay. So that will restrict to become m infinity. So there will be some certain number of values for which will minima. After that you won't see anything. Okay. That depends on the value of lambda by b. Lambda by b ratio, depending on the lambda by b, you will see how many number of diffraction minima on the screen. Okay. If lambda by b is very small, okay, you will get very large number of minima. And if lambda by b is very small, because if you go for small 1, 2, 3, 4 m की जगह में you reach 1, so you won't see infinite number of minima here. So that will be restricted by the sine theta. So now how many minima we will see? I will give you an example after finishing this theory. So now let's say, so what I'm trying to say, what is sine theta? So sine theta is actually restricted by this limit. Okay, now if I put the value of sine theta here, so that will give you actually
क्या होगा ये m lambda divided by क्या होगा b less than equal to 1 less than equal to -1. So that means m का वैल्यू जो है it is restricted by b by lambda. B by lambda, lambda by b by lambda. Okay, so how many b by lambda? So maximum number of minima is restricted by m less than b by lambda. So that means in the setup, what if you, so in the setup, if you have very small close, very sorry, b is, if b is large, you will see large number of minima here. Okay, so it's actually depends on the ratio, the factor b by lambda. Okay, if b by lambda zyada hai, m will be large. Okay, so this is now what I'm trying to say. So this, let us find out what are the maxima. Okay, so condition for maxima. So now for any extrema, we know that first derivative of the function should be 0. So we have a function I equal to I beta. So for extremum, मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़े हैं di by d beta should be 0. Okay, so now what is I is your I0 sine square beta divided by beta square. Now we will find out di by d beta and see what are the solution we can get for beta. And if you get beta effectively, you will find theta. Now if I, ये तो बहुत इजी है ना? Yes, sir. Okay, नहीं है इसमें, बस आपको जैसे कोदाल से माटी खोदते हैं ना, वैसे खोदते जाओ, you will find out the solution. So I0, so if I do the derivative of the sine beta first, so sine beta cos beta divided by beta square minus, now we will do the derivative of beta square. So 2 sine square beta divided by beta cube equal to 0. So now see, you can take out, so this is 0. So you can take out sine beta from here, sine beta, and it will give you what? Beta sine square beta अगर ले लेंगे और beta square से multiply कर देंगे, बाकी सब 0 कर देंगे, beta can be 0, so no problem in that. So it will give you, if you common take common beta q also, you will get beta, and cos theta if you take common, then you will get tan theta. Excuse me, sir. 2 sin beta cos beta होगा. Yes, sir. वहाँ 2 मिस कर दिए सर. हाँ sir. 2 miss कर गए sir. sin स्क्वायर है ना सर. Yes, sir. Now see, we have 2 roots of beta. So now first root, so sine beta is 0. So we have already discussed this one. So for this equation you will get beta. So for this beta roots we have already discussed, gives the condition for minima. So since it is a quadratic equation, so you will get another root from here, and obviously one root give you minima, other root will give you maxima. Okay, क्या कुछ बोल रहे हो? Excuse me sir, sir वहाँ 2 sin square बीटा के नीचे बीटा क्यों है सर फर्स्ट लाइन में? ये बीटा स्क्वायर का आप डेरिवेटिव कीजिए ना. Okay sir. Okay, so now this is what we have already discussed. So now another root will give you, so beta minus tan beta, और अगर आप इसको ठीक से लिखेंगे, so we will give you tan beta equal to beta. So this will give you condition for
maxima. समझ में आ रहा है? So now we have to solve this. Okay, so this is a transcendental equation. You cannot solve by analytical method. You have to use computer or any graphical method also. Sir, Yeah. tan beta is equal to beta. That means beta is very small. No. It is not the condition. It is we have got from here. Obviously, beta is small. Okay. But this is obviously what a tan beta is beta. It gives you beta is very small. But we didn't impose this condition here. We got it naturally from the root. Okay. So from this one we'll find out the maxima. Okay. So let's find out the maxima. ये यहाँ पे पहले मुझते हैं. पहले अभी हम लोग जो मिनिमा है वो निकाल लेते हैं. सपोज आपका स्क्रीन कैसा था? आपका स्क्रीन ऐसा था ना, और ये आपका थीटा इक्वल टू 0 है. तो हम लोगों ने क्या बोला कि यहाँ पे एक मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मिलेगा, जो सेंट्रल मैक्सिमा है, जिसका वैल्यू है I0, है कि नहीं? अगर मैं इसको इस तरह से प्लॉट करूं, थोड़ा सा इस तरह से प्लॉट करूं, मतलब मैं इसको घुमा रहा हूं 90 डिग्री. सो लेट प्लॉट लाइक दिस. ये जो स्क्रीन है आपका, मैं स्क्रीन के एलोंग में अगर मूव करेंगे, सो दैट मींस यू आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग थीटा. सो दिस इज द स्क्रीन. ये वाला स्क्रीन है आपका, और ये आपका थीटा इक्वल टू 0 है. ये अपर साइड है, so theta is increasing this side and theta is decreasing this side. Sorry, negative theta is increasing this side. Okay, so now what I am trying to say, let's not plot theta. Theta will complicate the situation. Okay, better हमारा जो मिनिमा का कंडीशन क्या है? So this is the condition for minima. So beta equal to m pi. तो मैं अगर बीटा प्लॉट करूंगा थीटा के जगह में, बिकॉज बीटा और थीटा में अंतर ही क्या है? बीटा इक्वल टू पाई बी बाय लैम्डा इनटू sin थीटा. ओके, so this is the constant is there. So it's a linear trigonometric relation is there. So let's put beta here. Okay, so that means beta is here 0 will give you central maxima, or beta is increasing this side, or beta is minus beta is increasing this side. So that means this is the upper side of the upper side of the screen, and ये lower side of the below lower side of the screen. So now, so from where you will get first minima? So first minima you will get at pi, because m equal to क्या है? Where m equal to plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 like this. Dot. Infinite तक नहीं जाएगा. Okay, मैं अभी बताया. So plus minus 1 means plus minus pi. So you will get minus pi. Okay, so here you will get minima obviously. Okay, then second minima you will get at 2 pi, and then you will get third minima at 3 pi. सर Yes. साइन 2 बीटा बराबर 0 ना होगा सर, कि साइन बीटा बराबर 0 होगा? है? वहां से सर कॉमन 2 साइन बीटा कॉस बीटा कॉमन लिए थे ना सर, तब ना बीटा माइनस टेन बीटा बराबर 0 है. हाँ, कॉस ले लिया. कॉस तो 0 नहीं होता है ना. कॉस बीटा यहाँ से कैसे 0, जब बीटा 0 होगा तो ये नहीं होगा ना, ये रूट नहीं आएगा. तो इसलिए बीटा ले रहे हैं हम. बीटा का 2 ही रूट आपको मिलेगा. सर कॉमन 2 साइन बीटा कॉस बीटा लिए थे ना. अरे क्या प्रॉब्लम है? 2 साइन बीटा बाय बीटा स्क्वायर लिए थे कॉमन. यहाँ पे अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे बीटा क्यों कॉमन लो? ओके, और 2 साइन बीटा कॉमन लो, तो यहाँ पे बीटा पड़ा रहेगा और यहाँ पे tan बीटा आएगा. ठीक है सर. ये मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि राइट साइड में सब 0 हो जाएगा. तो अब क्या बोला? बीटा इक्वल टू 0 विल गिव यू मैक्सिमा. दिस इज I0. Okay, so now if I plot I by I0, I0 से मैं डिवाइड कर रहा हूं. ठीक है, तो हमारा इंटेंसिटी क्या है? I इक्वल टू I0 sin स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर.
Okay, so मैं I by I0 plot कर रहा हूँ. So now what happened at beta equal to 0, this will give you 1. So that means you will have a maximum intensity here. 1. कौन कुछ लिख रहे हो क्या कोई? No, sir. Okay. So now you will get a maximum intensity here, and we know that you will get minimum intensity here. Okay. So now we don't know what is the second. This is central maximum. This is central maximum, and this is fast minima. This is also fast minima. Either side you will get fast minima. Okay, and this is second minima, third minimum, but I don't know where is the fast maxima. So this solution will give you the value of fast beta, for which you will get fast maxima. So I'm not I'm drawing it, so you will get one mini maxima fast and then minima again, then maxima, then minima. Okay, so like this. But I don't know yet that what is the position of this maxima actually. minus 3 pi. So इसका पोजीशन क्या है हम नहीं जानते, बट एक मैक्सिमा तो आएगा, तो हम लोग अभी यहां से निकलेंगे, so निकालेंगे. So this is what this is second minima, and this is also second minima, and this is first maxima. I don't know what is the value of beta for which you will get this. I don't know what is this value actually. Okay, हम लोग अभी निकालेंगे इसको, ठीक है. So this is also fast maximum. So this is actually, देखिए पैटर्न ये है, beta equal to 0 will give you central maxima, or we can say it's zeroth order maxima, because for beta equal to 0, for beta equal to this one, I don't know, we are going to find out. So this will give you fast maxima, second maxima, fast maxima, second maxima, then first minima, second minima, third minima, like that. So now we are going to find out for which you will get fast or second maxima. Sir, why the amplitude of intensity goes decreasing? Oh, that we will show. That I will show that it is mathematically will show that it is going to decrease. Okay? हम दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बीटा का वैल्यू जब निकालेंगे ना, तो फॉर फास्ट सपोज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बीटा यू विल गेट फास्ट मैक्सिमा, तो बीटा मिल जाएगा, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ बीटा हियर, you will get I by I0, and you can put that it will see, you will see that it will be less than 1, and then you will see it will be again less than this one. I will come to that point. Okay, धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इसे. So now I will find out for what value of beta we will get maximum, first order, second order, third order maximum. Okay, so now our job is to find out. So tan beta equal to beta, this transcendental equation, the solution will give you the values of beta for which we will get maxima. I'm not talking about the central maxima, other than central maxima. This one, this one, this one, this one. Okay, so it is a very simple thing. We can do it exactly in computer, but what? So what I will do, I will take two equations, y equal to tan beta, and then another equation y equal to beta. ये दोनों हम लोग प्लॉट करेंगे, एंड जहां जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही होगा इसका सॉल्यूशन. ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किए थे शायद 10th में. दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, इसको हम लोग प्लॉट करते थे, मोस्टली हम लोग स्ट्रेट लाइन करते थे क्योंकि हम लोग बाकी तो सॉल्व नहीं कर पाते थे, तो वही हम लोग करेंगे यहाँ पे. So now first you will plot tan beta is a straight line with a 45-degree angle with respect to the x-axis. Let us first draw it.
So let's say this is your beta and this is your y. Okay, let us first draw क्या बोलते हैं उसे, ये tan बीटा. tan बीटा कैसे ड्रॉ करेंगे? ये tan बीटा का कैसा होता है? y एक्सिस से असिम्प्टोट जाता है सर और ओरिजिन को इंटरसेक्ट करता है. Not only y axis, ये पाई का जो इंटीग्रल मल्टीपल है वहां पे वो एसिम्प्टोट्स आएगा, तो वही करेंगे हम लोग. और पाई बाय 2 का जो इंटीग्रल मल्टीपल है उसमें वो 0 होगा, है कि नहीं? Yes, sir. So this is 0, this is pi by 2, let's say pi, and this is 3 pi by 2 and this is 2 pi. तो क्या होगा, ये एसिम्प्टोट से ये ऐसे होके जाके फिर यहाँ पे एसिम्प्टोट होगा, है कि नहीं? सिमिलरली यहाँ से स्टार्ट होगा एसिम्प्टोट, पाई में 0 होगा, फिर यहाँ पे एसिम्प्टोट होगा. सिमिलरली इस तरह से होंगे. सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा. ये आपका है पाई बाय 2, तो ये ये मैंने गलत ड्रॉ किया सर से जाएगा. Okay, this is pi, and similarly this is your pi by, this is pi 3 pi by 2 minus actually. Okay, and then you will get from here, and this is your minus 2 pi. Okay, so now if this is your y equal to tan beta. These are all y equal to tan beta. So now if I plot y equal to beta, so it will, let's say this is y equal to beta. This is your y equal to beta. So this is making 45-degree angle. ओके, सो कहां पे छेदन हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है. तो कहां पे तो और होगा ना इस तरह से. तो ये जो वैल्यू है ये तो मैं यहाँ से निकाल नहीं पाऊंगा. तो ये जहां पे यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, ये पॉइंट है आपका 1.43 पाई. ओके, सिमिलरली ये जहां पे छेद हो रहा है, ये जो पॉइंट है आपका 2.48 पाई ना 46 पाई. So this is your 2.46 pi. So these are the value. 1 minute मैं कॉल लेता हूँ. हेलो काकू, কেমন আছো? কাকু আমাকে, আমি তোমাকে একটু পরে ফোন করছি, আধ ঘন্টা পরে আমি একটা ক্লাস নিচ্ছি. হ্যাঁ, আচ্ছা তাহলে আধ ঘন্টা পরে এসো না. তোমার আধ ঘন্টা লাগবে ওখানে নাকি? তাহলে একটু ক্যাম্পাসে এসো, মিনিট 15 আমি তারপরে আসছি. হ্যাঁ. So now what I'm trying to say, so these are the solution. Okay, so similarly यहाँ पे भी होगा, ये आपका होगा -1.43 पाई, और यहाँ पे होगा आपका -2.46 पाई. These are the solution. तो क्या क्या solution मिला आपको? तो tan बीटा इक्वल टू बीटा का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन है आपका बीटा इक्वल टू 1.465 एंड सेकेंड सॉल्यूशन है आपका 2.44, ये 43 था 465. ठीक है, इस तरह से आपको मिलता जाएगा. ठीक है, तो नाउ वी नो, सो फ्रॉम वेयर
you will get the first maxima. So first maxima you will get at 1.435. Second maxima you will get at 2.465. Similarly, यहाँ पे भी ऐसे ही है. So you will get first maxima at minus 1.435. Similarly, you will get here also 2.465. समझ में आ रहा है? अभी कंप्लीट हो गया स्पेक्ट्रम आपका. अभी जो आप बोल रहे थे ये घटेगा क्यों, ये इंटरफेरेंस जैसा सेम नहीं क्यों होगा, ऑल मैक्सिमा क्यों सेम इसमें नहीं आएगा. ठीक है, नाउ वी कैन कैलकुलेट इट वेरी इजीली. तो ये ठीक है ना? एनी क्वेश्चन अबाउट इट? No, sir. नो सर 85 बच्चे हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है इसमें. सर वैल्यू से एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, क्लियर दिख नहीं रहा. वैल्यू, ये वैल्यू यस सर. एक्सक्यूज मी सर, फास्ट इंटरसेक्शन जो है 1.435, सेकेंड इंटरसेक्शन है 2.465, थर्ड छोड़ो, थर्ड भी होगा, इट्स ओके, 2 इज ओके. मैंने दोनों ही यहाँ पे ड्रॉ किया तो दोनों ही ठीक है. अभी ठीक है? सर द Yes, sir. रेशियो रिलेशन इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा सर. क्या क्या क्या? सर इसका रेशियो क्या होगा मैक्सिमा का? हाँ, ये इसमें अभी निकालेंगे. I by I0, you just put the value of beta here. Suppose if you want, suppose if I say this is I1, let's say this is I2. Now we can find out I1 by I0 or I2 by I0 by just putting the value of beta here. तो ये तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, बट मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, आई विल शो. ओके, इसमें मैं क्योंकि साफ करने वाला हूँ, मैं और एक बार नहीं ड्रॉ कर सकता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. कोई डाउट इसमें है क्या? लास्ट पॉइंट को फिर से एक बार डिस्कस कर दीजिए. अच्छा ठीक है. तो हमारा एक बिंदु देखिए, हमारा कंडीशन फॉर मिनिमा क्या है? बीटा इक्वल टू एम पाई, ये है ना कंडीशन फॉर मिनिमा. ठीक है, और बीटा इक्वल टू 0 के लिए आपको मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा और कंडीशन फॉर मिनिमा. ठीक है, तो मैंने इसको ड्रॉ किया. ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा बीटा इक्वल टू 0 में, तो ये 1 हो जाता है. I1 I0 मतलब से ये जो होगा ये 1 हो जाएगा, दैट्स व्हाई I put I by I0 इक्वल टू 1. ओके, तो नाउ सेंट्रल मैक्सिमा के बाद पहला मिनिमा कब आएगा? जब m इक्वल टू 1 होगा. सो पाई में मिनिमा आया. सेकेंड मिनिमा कब आएगा? 2 पाई में. सो ये सिमेट्रिकल है, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई में भी आपका मिनिमा आया है. सो नाउ दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा तो आना चाहिए ना. सो नाउ what is the value of beta for which you will get these maximas, first order, second order, both side of the central maxima. So to find out the value of beta for which you will get the maxima, so we use this transcendental equation tan beta equal to beta, and we solve but graphically. So how we solved it? So we have taken two graphs, y equal to tan beta and y equal to beta. So now this straight line is equals to y equal to beta, because we know that y equal to beta is a straight line with making 45 degree angle with the x-axis. Now next we have plot tan y equal to tan beta. So ये tan beta वाला plot तो आप जानते ही होंगे. So now ये जहाँ पे intersect हो रहा है, those intersection points are the solution of this transcendental equation. वो solution क्या है? Beta equal to 1.435, beta equal to 2.465, और भी काफी सारे हैं जो मैंने नहीं लिखा. So now we find out the value of beta for which we have got first maxima, second maxima. ठीक है? Now our job is to find out what is the intensity of first and second maxima. That means what is the ratio of I1 by I0 and I2 by I0. समझ में आ रहा है? यस सर. अच्छा ठीक है, let's do it. देखिए ये आपको मतलब एग्जाम में तो ठीक है आएगा, बट ये लॉजिक
थोड़ा समझना जरूरी है, लॉजिक ही सब है, चाहे वो पॉलिटिक्स का लॉजिक हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, तो you should understand the complicated logic. Okay, so now, so our job is to find out the intensity of central maxima. क्या है ये तो हम लोग निकाला ही है, central maxima is I0. Okay, that we know already. Okay, so now intensity of first order or first maxima we will put here. So I1 will become I0 into sin square beta. ये sin beta का वैल्यू क्या है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए बीटा इक्वल टू 1.435. So if I put 1.435 here, square divided by 1.435 इसका होल स्क्वायर. अगर कैलकुलेटर है तो आप निकाल सकते हैं. So I1 by I2 it will give you, ये मैंने निकाल के रखा है, मतलब मैं कॉपी करके लाया हूं, तो ये है 0.0496. 0.0496. So that means 4.96% of the central maximum. कितना छोटा है देखा, ये अगर 100% है ये घट के हो जाएगा 4.96%. That will be I1 by I0 ना sir. Yeah. I2 कहां से आ गया? I0. ठीक है. Similarly, you can also find out second order maxima in similar way. So it will give you I2 by I0. अगर आप करेंगे so it will give you sin square. क्या था ये? 2. सेकेंड का 4.5%. सेकंड का वाह वेरी गुड. 4.5. ये 4.5 नहीं सेकेंड सर. नहीं और भी कम होगा. ये मैं जो कॉपी करके लाया उसमें कम दिखा रहा है सर अभी जो लिख रहे हैं ना उसका निकाला सेकेंड का. वाया किया था नीचे. ये 1.6 है. So this will give you 0.016. So that means 1.6%. वैसे थर्ड का अभी और छोटा है. थर्ड का इतना आता है, अगर आप ये करेंगे, थर्ड का तो मैंने बीटा याद नहीं है. So this is actually 0.83% of I0. So that is how it gradually decreasing. So that's all for first order a single slit diffraction pattern. So now I will put some क्या बोलते हैं tutorial on that later. ये यहाँ ये this is the end of single slit experiment. ठीक है. कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं है ना. चलो वेरी गुड. तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं ना. हाँ सर, अब तक जो आपने पढ़ा है एक बार हम पढ़ लेते हैं. एक बार कल डाउट है तो पूछ लेते हैं. हाँ, आप लोग नोट्स ले रहे हैं ना? हाँ सर. अच्छा, मैं तो स्टेप जंप नहीं कर रहा हूँ. आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें. ठीक है. नो सर, नो सर.
So now the next topic is double slit experiment, double slit diffraction. आपका जो फ्रेनेल, मैंने सोचा फ्रेनेल भी सिलेबस है फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, लेकिन मैं कल रात को देखा आपके सिलेबस में फ्रेनेल डबल स्लिट फ्रेनेल डिफ्रैक्शन नहीं है, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। सो ये खत्म हो जाएगा तो डिफ्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। Obviously by name you can assume that there are two slit, okay. Let's, for simplicity, let's took two identical slit, मतलब दोनों का जो opening है they are identical, okay. So and they are separated by a distance d, okay. So that means we have two identical slit. Let's identical means the opening is same, इसका भी b opening है और इसका भी b opening है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका d। तो ये डिस्टेंस मेजर करने का मतलब इनका मिडिल पॉइंट लीजिए और इनका मिडिल पॉइंट लीजिए, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा यही आपका d है। तो मैं अगर थोड़ा सा ऊपर कर लूं, अगर मैं इतना ले लूं और इसका ले लूं इधर से, so this will give you the distance between two slits d। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बात तो सेम ही है, मैं इसको आधा ऊपर चला गया और इसको आधा ऊपर ले लिया, बात तो सेम ही है ना। So now, so and it is illuminated by plane wave। Plane wave of wavelength lambda, okay. So now let's put one b, planes here, and इसका जो फोकल पॉइंट है, इसका फोकल पॉइंट में हम लोगों ने एक स्क्रीन डाल दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। तो नाउ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं एक सिंगल स्लिट से, सपोज मैं आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी एट P ड्यू टू दिस टू डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, ओके। तो सिंगल स्लिट के लिए क्या होता है, इस स्लिट के लिए आपको ये आएगा एक, मैं तीन ही ड्रॉ कर रहा हूं, 3 लाइंस। So this will interfere and give you, let's say this is E1, the whole branch is E1, okay? Excuse me sir, Yes, sir small d क्या है? small d is the distance between two slits। जैसे ये दो स्लिट है ना, ये दो स्लिट के बीच में डिस्टेंस, तो इसका मिडिल पॉइंट ले लीजिए और इसका मिडिल पॉइंट लीजिए, ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है ये d है। तो मैंने क्या किया, ये चीज को थोड़ा ऊपर उठा दिया, मैं इस ऐसा कर दिया, ओके सर। बात सेम है ना। ये आपका b/2 है ना, और ये b/2 मैंने ऊपर कर दिया, बात सेम ही है, ठीक है। सो नाउ, सो इससे भी 3 मैं ड्रॉ करूंगा, तो ये भी आपको उधर से उधर जाएगा। सो लेट्स से दिस इज 1, because they are parallel beams, so this line also will be parallel, okay, and they will also meet here। So now that means E1 और E2 branch, ये दोनों ब्रांच, जैसे इसका एक डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा था, इसका भी एक डिफ्रैक्शन पैटर्न ये दोनों यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ये दोनों अभी मिलेगा and they superpose each other, and that is how you will get the total intensity at P। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Okay, Yes sir। so this is E1 and this is E2, and these two will interfere and produce the resultant pattern at P, okay।
तो सर इसका इंटेंसिटी तो ज्यादा होगा ना? That we'll see. ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा दिख रहा है ना, दो स्लिट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ना, तो Yes, sir. after getting the final result and if we put some assumption, we will see that it will become a double slit experiment. Okay. What is E1 and E2, sir? E1 is the total light intensity coming out from here. Total light, not intensity, total light wave. ऐसे E लिखा था ना, A cos omega t. ये इसका Yes, sir. Yes. पूरा ब्रांच के लिए है, ये पूरा ब्रांच के लिए है. तो ये भी बताइए, ये दो ब्रांच, now you just consider this is one single line ray and this is another single ray and they are coming out from here. So now if I want to find out the path difference between this one single ray U1 and E2, then what I have to do? So I have to draw a perpendicular from here to here. Okay, so this is the path difference between E1 and E2. जैसे हम लोग सिंगल सीट में दो सिंगल रे के लिए किए थे, ये बंच ऑफ रे के लिए यही है. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So now let's जैसे हम लोग किए थे, जैसे इसका क्या था? सर तो इसमें सिंगल रे क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्या बीम लेने का क्या जरूरत है? क्या लेने क्या? सर जैसे बीम ऑफ रेज लेने का क्या जरूरत है? अगर सिंगल रेज से करे तो उसमें क्या होगा? ये तो एक स्मॉल, ये तो एक होल नहीं है, ये तो एक स्लीट है, उसका फाइनाइट ओपनिंग है. तो फाइनाइट ओपनिंग से तो एक रे नहीं निकलेगा. यहाँ पे हजारों पॉइंट है जहां से ये वेव सेकेंडरी रे निकलेगा ना. मैं 3 ड्रॉ किया है और इसका टोटल इंटेंसिटी है, वेव जो है वो हम लोगों ने ओनली पहले जब सिंगल सीट किए थे वो निकाल के रखा है ऑलरेडी. वी विल यूज दैट. ओके, सिंगल रे नहीं है. दिस इज अ स्लीट, नॉट ए नैरो, नॉट ए होल लाइक पिन होल. इसमें से काफी रे निकलेगा. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay, so now I have to find out the U1 and E2 and then we will interfere them and find out the resultant wave at P. Okay, so now तो जो मैं कह रहा था, so A1, so ये A2 है, ये आपका A3 है. सिमिलरली इसके लिए क्या होगा? सेकेंड स्लिट के लिए B1, B2, B3. तो क्या होगा? ये B1 और B2 डॉट जो है, this is the path difference between E1 and E2. So E1, let's say the wave at P due to the first slit 1. Similarly, E2 is the wave at P due to slit 2. Now we know that the path difference between U1 and E2 ये कितना है? तो this is B2 dot. So now we know that since it is not parallel to the optics axis, so it will make, so this will also make an angle theta. Everybody will make an angle theta. So that means we know that जो पहले हम लोग किए थे सिमिलर एक्सपेरिमेंट, तो ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये हाइपोटेनस है. ठीक है, ये हाइपोटेनस कितना है? मैं अगर ड्रॉ करूंगा, ऊपर वाला U1 है आपका एंड ये आपका E2 है, ये मैंने ड्रॉ किया. सो ये आपका है A1, ये B1 है, तो मैंने यहां से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. This is B2 dot and now this is what? This is D. ये लेंथ D है. ठीक है, ये D है. So now this is perpendicular and this is your base, sorry, perpendicular, this is hypotenuse. Okay,
and this angle is theta, since this is theta and this is also theta. ये मैंने सिंगल स्लिट के लिए किया था, so that means V2 V1 ऐसा क्या V1 B2 dash. V1 डॉट करते हैं इसे, V1 डॉट V1 डॉट, so ये V1 डॉट है, so V1 डॉट इक्वल टू कितना होगा D sin theta. Very good. So now what is the path phase difference? 2 pi by lambda into D sin theta. Yes, 2 pi by lambda into d sin. So now, now we know that from single slit experiment, from the single slit experiment, from single slit, the wave equation at P कितना आया था आपको याद होगा, E इक्वल टू आया था आपका A साइन बीटा बाय बीटा कॉस ओमेगा टी माइनस n फाई बाई 2, ये आया था ना, देखिए सिंगल सीट में. Yes, sir. Now you know that n pi by 2 is nothing but it is a beta equal to pi b sin theta by lambda. ये हम लोगों ने प्रूव किया था. So now we can write it down here just beta. तो आपका ये सब ठीक है सर n-1 था, क्या? n-1/2 था. हाँ उसको हम लोग if a is large you can put okay n-1 5 by 2. So for large n you can write down this one as, for large n you can write down this one as a sin beta by beta cos omega t minus n phi by 2. In our large n you can ignore 1. So now आपका अभी कभी क्लास है, कब है, कितने बजे क्लास है? सर 11:15 ना, तो 11 तो हो गया, तो एक मिनट मैं लिख देता हूं. तो E1 कितना होगा, तो ये बीटा है, तो E1 आपको मिल जाएगा ब्रो a sin बीटा बाय बीटा cos ओमेगा t माइनस बीटा, और E2 क्या होगा, E2 ये इसके साथ जस्ट एक फेज डिफरेंस जो है ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैं माइनस ऐड कर रहा हूं, तो ये. सो नाउ टोटल इंटेंसिटी तो नहीं, वेव एट P ड्यू टू combined effect of slit 1 and 2 कितना होगा, just superposition of these two wave E equal to Q1 plus E2. तो आप इसको कर सकते हैं घर में. So if we just sine बीटा by बीटा कॉमन ले लेंगे, तो cos ओमेगा t minus बीटा plus cos ओमेगा t minus बीटा minus 5. So tomorrow we will do that from here. ठीक है, आप लोग जाइए दूसरे क्लास अटेंड कीजिए. थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे. थैंक यू. धन्यवाद. वेलकम. थैंक यू सर. वेलकम.